Good evening, ma'am. Very good afternoon. Good evening, ma'am. And it's a good afternoon, it's not good evening. Good afternoon, ma'am. Yeah, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. So just let's wait for another 2-3 minutes, then we can start the briefing. वो तुमको बोला था ना उसके लिए चूज करोगे अच्छा को जल्दी से लेके आए। लो। मैंने पहले बात कर लूंगा ना मैंने क्योंकि सामने जो लेके बात काट क्यों दिया? कुछ नहीं थी आ गया? तो इसका रास्ता उठी जाती है ना पुलिस ने दिया है जवाब देगी नहीं, ना देखिए बना हुआ ना वर्ड का तो हमने काट के इसको छोटा किया था। आप वो ले लीजिए कैंपस लेआउट मैप जो है ना, मैं दे रहा हूँ तुम्हें व्हाट्सएप पे। क्योंकि इसका जो है ना डज द यूनिवर्सिटी सफिशिएंट क्लास हाँ बोलो आपकी बात बता जो दो है आपकी बात टोटल क्लास नहीं, वो वर्ड फाइल पे मांग रहा है ना, इसने मैं देखेंगे देखिए आप तो उसमें कलर क्यों करना है? बोलो क्योंकि उन्होंने मेरे से उन्होंने पर्सनल लॉग्स दूसरा वर्ड फाइल भेज देंगे ना। ऑडिटोरियम नहीं क्या है उनको रिप्लाई का क्या मतलब आज सेमिनार दिमाग खराब मत करो संजीव इंडोर फैसिलिटी स्पोर्ट्स हर बार एक लाइन बोला करो मैंने तुम्हें कहा कि तुम उनको हैं? कुछ बोलो वो क्या एक तो पैदल है ये नहीं हुआ सब इतना आ रहा लक्ष्य के मरीज कैसा बताइए। हेलो हाँ नमस्कार नहीं क्या चीज बताइए हाँ 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 वो अरे वो ऐसे हाँ मैंने मेरी बात हुई थी उसमें बात हुई थी बना दी वो बनी थी उनके पास बैंक से मैसेज आया था या आपका अकाउंट बंद हो जाएगा हम्म हम्म हाँ उसमें साइन करके स्कैन करके फिर भेज देता हूँ पर आज ही भेज देना very good afternoon to all of you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. So as all of afternoon, you are ma'am. aware, as all of you are aware that UP State Higher Education has constituted a committee to inspect the ये तो आधार है। university, and they have been visiting all the private universities in the state. Yeah, even today they are having visit of one of the universities. The team will be visiting us tomorrow. It is 4-member team, and team will be coming. Dr. T. So team will be arriving sometime around 10 o'clock in the morning, and we have discussed. They have not said that how long they will be there. Therefore, we have planned their visit for the whole year. That only they can visit to check whether the university has the
requisite infrastructure, resources, facilities, all that, and the performer which they have sent, which is being compiled by by additional provinces and HR, registrar's office, examination department, and other relevant departments are in the where they are one side they are looking at the facility, at the same time how much the MIT University has implemented the national education policies provision. And so therefore the major points which they will be having. So the major points which they will be having will be the whether the university is having, apart from taking the various aspects of the university, right from the legal status of the university, organization description, academic activities description, admission process, fee structure, faculty details, infrastructure, where it includes the classrooms, labs, research lab, and various facilities right from the hostel to the sports units to the ACGC, and then we have the DSW office or other facilities what we have. As per the UGC directive, because what all the cells we are need to have, so that means all those cells we have got. And then the financial viability of the university, governance system, research profile, and academic results of the students, accreditations, ranking of the university, status of national education policy, implementation, and also progress on the 18 actionable points regarding the implementation of NAP 2020. So therefore, they have not sent any program schedule as it happens in the accreditation, whether it's the NEC accreditation or the QAA accreditation or the WASC accreditation or other accreditation, where the set program schedule is always there, so where we are able to tell from so and so time to so and so will be required or will attend so and so meeting. But it's important because these are the aspects when they are looking at the documents are being prepared, already compiled, which will be given to them. One of very important aspect, which is all of you have, we will be sending the schedule of the visit to various institutions and facilities. And the route map will be prepared. I have asked Mohit to first to make the list, and then Dr. Bansal will finalize the route map, and it will also be, we will be having the, either they will be going as single team or they may be going as a 3 teams or 2 teams. Accordingly, we will divide. So we are making our own detailed program schedule. What they will, after tomorrow morning when they visit, after showing them, they say no, they don't want to visit all the institutions, they want to visit all the facilities, or they want to all. Whatever they will say, we will inform you tomorrow morning. So, and we will also inform you who will be informing you about what, depending upon the whatever the initial meeting says. In case they say they would like to have the presentation of the university in detail, and that presentation in the presence of all the deans and HOIs, on the WhatsApp the message will come, and my request will be all of you that the moment the message comes, you people immediately reach in the E2 auditorium. That's the way we are making the arrangement for the presentation and sitting plan for the deans and HOIs and whoever the people we are inviting. And then when the visit will be there, very important, because they will be asking you if they are visiting the institution or they are meeting the groups here. So we are making the
So this program should do. program school also. So what we have planned is a visit to the various institution as well as interaction with the various people. So therefore, if we are calling if they're thinking they would like to meet the teams in E2, because the E2 lounge is being made a working office for them. So we will inform you immediately that so and so team can come. That names we will share with you people today. These are the groups are made and who will be the in charge. For example, if it is the academic team, Dr. P will be in charge. If it is infrastructure team, Dr. Bansal will be in charge. If it is the student, the activity, Dr. Bansal will be in charge with the DSW. And if it is admissions, admission department team will be there. And if it is examination, then the Dr. Sanjeev Bansal and COE, the whole examination committee will be there. If it is the international affairs, then Dr. Singh and the IID team and some of the faculty coordinators will be there. If it is finance team, then the Ashish Bindani and Jogesh will be there. If it is the IT support team, then will be Dr. Joyce Sodhi and Santhil and maybe one or two persons from the academic office and examination office and the relevant will see. If it is HR related, the HR team, both Dr. Richard and Dr. Messengy or recruitment, one or two people, and maybe from the other department we will have. And if it is any other department, so that so that you people know in case there is other meetings, so that you have to come. And so you must know, we'll share with you number of how many finally how the programs are groups. We are not giving the list of all the programs because some are the pathways. With the national education policy, it is always what the student chooses. Maybe the student will choose a single major, double major, or major minor, or the pathway. So we have, for our convenience, we have made them as a, the BA, BBA, and then BBA we are saying CC, and then we are saying BBA International. But it is a BBA program. So all the pathways are not shown as a separate program. Because, for example, if you are saying the BA International, we are not going to give the BA International degree to anybody. The person will exit after 1 year or exit after 2 years. It will be either certificate or it will be a diploma. If the student does not go to the foreign university, then it will get the BA. If I exit after 3 years, otherwise he will be getting the 4-year BA honors or honors research. So that's why we have done that work also we have done. That we don't have to showcase, we have got the 400 programs. Really, they are not the 400 programs. And then most important, my request to all of you that please focus on your labs, your curriculum. They may ask you that, okay, how your NEP has been developed has been implemented, how the student progression is there, the alumni engagement is there, industry engagement is there, how much the apprenticeship integrated program are there, how many students have benefited from the apprenticeship integrated programs, what is the result of your students, what percentage, that kind of the things how you are helping the students if they are from the, stress or are having any difficulties. And if there's they may ask you even for the, if there is ragging or anything, though in the format nowhere is given, but they can always ask questions. So I'm sure that another thing, the curriculum development. They have asked 3-4 times that how the curriculum is developed. So we have given the process and we said that
You know, the CRC focuses on the course curriculum review and development through area advisory board, where the PROC does the program review and the curriculum development through through board of studies, and then it goes to the board of faculty, and then finally to the academic council for the approval. So they have asked them that how many the external people are there in the board of studies or board of faculty. So the dean should, in case the dean is interacting, dean should know how many are the external members in his or her board of faculty, board of chairman of the board of studies should know what is the percentage wise, the composition of BOS, what is the composition, how many external are there, and also that how the campuses of that AUP campuses, the HOIs and faculty are involved from other campuses. So that composition you should know, and progression, what has been the placement of the progression, how you're supporting entrepreneurship, how the students are starting their venture, how are you supporting them, and if there are any grievances, how the grievances are redressed, the faculty recruitment. So that in the faculty recruitment, it is that after selecting the resume, then is the shortlisted candidate, there is a selection committee. And as per the UGC guideline, the selection committee is chaired by the vice chancellor. So what we are doing first, technical interviews are doing, and then the VC is doing the interview. So rather than explaining that process, we have to, as per the UGC, we have the selection committee and chaired by the vice chancellor. I'm sure that many of you HR must be getting the signatures from all of you, because some of the committees, the recent one, that selections which we have done, and that is so. Please, and how you do the manpower planning. So the process, that we have the manpower planning committee, and for the teaching load, and for the regulatory requirements in the teaching load, on that basis we do the manpower planning, and then also look at the cadre ratio and the recruitment department that initiate the recruitment, and we have the external expert also, and if there's any shortage of faculty, we engage the visiting faculty. Wherever the professor of practice are there, you can always mention that for value addition we have the professor of practice also. Dr. Khatri, you would like to add before I forget them, and then Dr. Ramsali. का जो डॉक्टर की क्वेश्चन है, हिंदी बात अपना वो कितने टाइम Yeah, it's active. Good afternoon, everyone. So we are going for this very important UP Higher Education Council inspection visit tomorrow. Today also they are here only in the city. So when they can be there, we will plan accordingly for 10. Initially, they will come here, have an initial interaction and start with the presentation, which is going to be in E2 auditorium. After that, they may like to spend some time checking the documents, or they may start parallelly the visits. Again, these visits can be done together as a team, or they may split them. So 4 members are coming, so it may be possible that one may continue here to sit, who is chairing this inspection team, and others 3 may be parallelly divided into 3 places. So we will be showing them our research facilities, our
institutional visits will be there, and then infrastructure, other support services such as library, cafeteria, dormitories, all they will be visiting. We will also be planning whether innovation incubator can be there. As far as academic is concerned, definitely, as Madam had said, that we should just please go through the processes that is there, so that, because if they visit to the institution, and you should also identify one or two faculties who are having a very clear understanding, and if they like to interact with the faculty only, they should say. Also about mentoring program and the academic program also, that how program are developed, how they are revised, how courses are developed or revised, what is our requirement of minimum. In every 3 years, they have to go through a revision process. What are the various committees moving from CRC to AEB to PROC to BOS to BOF, then academic council and then executive council. These processes they will be able to speak if they are required to say so. Otherwise, don't ask faculty to say from their own side until it has been asked exclusively by them to say to the faculty that yes, you tell us. Otherwise, only choice or dean should entertain. Lab should be clean. Yeah, lab should be prepared. आप लोग आज अपनी labs देख लीजिए. They should be presentable. अगर उनमें clean करवाना है कुछ, तो अपने जो आपकी lab attendants हैं या lab assistants हैं, उनको बोल के और lab incharges से बोल के मेक श्योर करिए कि आपके लैब क्लासरूम सब बहुत क्लीन और प्रोसेसेस हों. अपने अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं आपके, उनके जो भी आसपास के एडमिन स्टाफ है, उनसे बोल के प्लीज गेट इट क्लियर एंड डन. एंड एज फार एज पेपर्स, अगर जरूरत पड़े तो कुछ आपके एकेडमिक, इफ दे वांट टू सी हाउ अटेंडेंस इज मेंटेन, हाउ कोर्स फाइल्स आर मेंटेन, सेशन प्लान्स, अगर वो मांगे तो अपने रेडी रखिए. बट ऑफ द एकेडमिक प्रोसेस वी कैन बी मेंटेन. Yeah. So I think Dr. Bansal, you can talk about examination also and then process. Yeah, Dr. Shukla, Dr. Khatri, do we have the names of the people also who are coming? Do we have the names of the committee members? अभी नहीं है डॉक्टर सर, अभी नहीं है सर, नाम नहीं. Okay. It will be known tomorrow, sir. Sir, my request to everyone is, first of all, again wish you a very happy Diwali, and I know many of you may be feeling why it is tomorrow, but this is something which is not planned by us. They are already here, and they will be coming tomorrow. My only We can't hear you. am I audible too, sir? Yes, now. So my request to all is that please, they are see, they would be coming to ask, and like in case if they are asking anything which you are not very sure, please do not reply anything which should be vague. So, for example, result analysis, if they ask, then please prepare for their respective program. So please ask your examination people who are taking care of who are taking care of examination, who knows about the examination system, who knows about block examination, anyone from the academics on the same line. Infrastructure, my request is they are very particular regarding infrastructure, so please see to the cleanliness and everything of the infrastructure. The map, as ma'am has said, we would be letting you know when they will be coming. So only request is we have to speak as much required, nothing extra, nothing less. Thank you so much. So what we are planning, that there the 4 persons are coming. They initially the meeting was scheduled on 4th of October, and since that was a long weekend, we requested them. They initially the chairperson did not agree. The later on, on request at the senior level, that the visit was postponed, and they have given this fresh dates to us for the 18th and to the other university 17th. Earlier when they had the half-day visit. Now they have not mentioned that. 1 second, Dr. Dev Congress Council. Yeah, so some of the important departments that are planned is apart from library, sir, we are going to have this that team coming to internationalization also, because they want to understand that part in a very clear way also. In fact, separate section is there also. So I think, sir, they will be coming to your part, Gurunda sir, for into IID also. So that is one thing to be informed also.
I would request all the deans and deputy deans to please have the briefing also quickly of your. Dr. Khatri, anything which they have asked specifically for the internationalization? Sir, what we are doing for our students, and in fact, sir, we have got a very detailed document from you also. We had a little bit of editing in terms of size is done, but broadly inwards mobility, outwards mobility, study abroad. Sir, 3C and continental, we are not 3C and international, we are not mentioning anywhere. But yes, Okay. SAP, our training programs, MOUs, the dual degree programs, all that can be covered. So Okay. that aspect, just to inform, sir, 3C and international, we will be missing. Just Okay, but then if you are giving a presentation, then there is no presentation which is required at our end. When we are speaking about the infrastructure, so we have given them the total number of rooms, and there are some number of classrooms which are shared by many institutions. Oh, no, Dr. Bansal, I'm saying something else. I'm saying that one combined presentation is being given tomorrow morning. So when they will be visiting us, then there is no presentation which is required at our end, isn't it? No, sir. No, sir. Okay. Dr. Khatri, I have one point to understand. Normally in such meetings, such visits, the committee like to meet faculty or students separately. If there are any plans so that we can identify accordingly. can you repeat the question? I can't hear you from you. Sorry? Can you repeat the question? Normally in such visits, the committee always likes to meet faculty, group of faculty members or the students separately. Okay. What we observed last time. So now we is have- there any plan for this time as well so that we can identify accordingly? No, for students, it is not there. In fact, already there is a pop-up which has been put on Amazon. That tomorrow is not going to be a working day for students. There will not be any classes for the students. Students are already through Amazon. It has been informed to them. And definitely they don't have any plan. They have not requested also for students interaction. Only thing they have said that they want to visit the institution. Primarily, the reason can be that how academic conducts are there. They want to see the facilities in the institutions, the lab facilities, the documents how are maintained, how faculties are well equipped in terms of understanding. So that aspect we should take care of. So in that case, will they coming to all the institutions separately? No. Because accordingly we can plan, we can identify some place where they can stay, and from there we can As take it a for visit. sure they are coming, so please plan accordingly. We are identifying 3 to 4 institutions from each block maximum. For example, from K block, the plan is for performing arts, fine arts, architecture, design, ASPO, a school of the drama, and on K3 side, similarly for BBA and sociology. Similarly, when we talk about E block, plan is for applied science, asset, Artificial Center for Artificial Amity Center for Artificial Intelligence, ACAI, and also AIT. So Professor Vivek, your institution will also be shared. So Dr. K. M. Soni, your domain will also be mostly covered in this. When we talk about I block, we are planning for AIBS, ALS, organic agriculture, travel and hospitality. So Dr. Sajnani, they may like to visit the lab, your restaurant labs of hospitality. That we would. We are ready with that, sir. And AIIT labs also, so Dr. Rekha, AIIT labs, they may like to visit if they, as they are planning to come to I block. Yes, sir. In F block, the plan is for Center of Happiness, Amity Business School. So 2 institutions are there. Physiotherapy, we are yet to decide whether we will take. Then we will go to the sports side, and then we will also go take the. So Dr. Khatri, are you going to give the plan, because it should not be random? I mean, whenever they are coming to E block, you had quoted the name of the institutions. So are you going to give some of the plans from where or what they will be visiting, or the institution can take their own call? Dr. Pandey, there can be 2 plans that we have to work on. So we are planning that, and assuming that they will go as a team together. So this will be plan A and sequence we are planning. Suppose they say we want to divide into 3 different teams with their 3 members, and some of the members from here will also join them to bring to the institutions. So that will be plan B. The options for both plan A and plan B will be shared, and immediately before starting, we will just tell that whether we are going with plan A and plan B. And you are knowing well in advance that what is plan A, what is plan B, and accordingly you can be ready for that. Okay, perfect. Thank you. Do we need to exclusively plan anything for the online?
Sir Avinash, it is yet to be decided whether online we are going to take them. Yes, we want to, but there is also Univo. So we are. No, nothing to do with the Univo actually. It is So- to be done only through the F2. If you want to show, would you like to show from F2 or from? Suggest what is to be shown so that we'll be prepared for. No, what you will recommend? F block or that extension? No, extension is nothing. Extension is the call center or the Right. support center. But if it is so, then perhaps we can take them along. Right. That's So not the point. But F2 is somewhere where we can perhaps invite here and explain them the modality and the number of students and the recognitions and the other things support. So everything can be explained from here, from the F2. But for that, do we need to have our presentation ready? you don't need to have a presentation ready to show for that site as an exclusive plan. Keep it ready if they want. And if they have time, you can be ready for that. But in the plan, there is no presentation while visiting an institution. But yes, all F2 online facilities they may visit. So be ready for that for sure. So any institute in K3? K3, yes, social sciences and ABA. Hello, Bhaiya. Yes, Dr. Nutin. Dr. Khatri, in J block, which are the institution? J block, we will share by evening because we can't have all the institution, but yes, yours are having a lot of labs. So yours, then click chemistry, we are planning there to show forensics, we are planning to show. Okay. Good afternoon, sir. Any institutions from D block, sir? If you can please share. Then ACTR, I can see Dr. Hitesh, I just recalled. Dr. Hitesh, your ACTR, they may also visit. Okay. So what time is there any tentative schedule? First half or second half? You know, I'm telling you, we have to go with two plans. We will make two plans, plan A and B, that will be shared by evening. Now, how they will move on, because they say they have not shared any plan. They had not yet okay to our also. But we have tentatively made based on initial discussion because they had a very brief discussion. They say we will come, give you a presentation, we will see the file, we will go to the institutions. That's it. Now, Okay. this institute, they will go in together, whether they will go parallelly. This will be decided when they will come. They say we will let you know in the morning when we'll come. But we will be ready with both the plans. And accordingly, we will share by evening today what will be A and B plan, whether it's parallel or sequential. Khatri, sir, Gagan here. Yes, Dr. Sir, any specific instructions regarding the studio facilities? Just have your faculties and your you can show something working if they are coming. So then we would like to see how it is functioning. Don't try to copy everything. You know that There is a disturbance, sir. There is We are not able to hear anything. A lot of disturbances is coming. now you can hear. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now it is better. Yeah. Thank you. Thank you. So Gagan, be ready with very specific details in order of priority. If they want, if they have 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, so what all things you will cover. First, try with the most important things. Okay. Dr. Khatri, Sir, what will any be the plans for sir, any Yes. plans for J3, AIB and answer? Both of them. Okay. Thank you, sir. Dr. Khatri, what will are you able to listen? Khatri, sir, for J2. Cannot hear. Dr. Sena, can you hear me? Hello. Dr. Khatri, now, yes. You're audible now. Yeah, now we can hear you. आप प्रोजेक्शन निकाल दो।
Dr. Khatri? Jogeshji, I think they have poor bandwidth. Poor bandwidth. Yes. I think. Dr. Sajnani, you were saying something? No, I think. Are you able to hear us? Yes. Jogeshji has a question. Yes, Dr. Nani. Yeah. Actually, Honorable Founder President's call came. He just wanted to know how's our preparation for Yes, ma'am. tomorrow's visit. Yes, ma'am. Yes, sir. So we were just sharing that we are having the interaction with the all the HOs and doing the briefing, and share that the program schedule is not yet finalized. They will only come, but we are telling in case any visit or interaction is asked by the visiting team, so the deans HOI they should be ready to immediately move into the whichever the venue we share with them at that time. So any questions you have? Jogeshji would like to say something. Ma'am, concerning the finance department, Mr. Pindra, he has to come for the tomorrow's meeting. Yeah, it is you come, and we will ask the visiting team that we have the finance officer, and when you would like to have the meeting, so we can call our the CFO. treasurer also. Okay. Okay, because in the Amity Act, it is not the CFO. Okay. Yeah. Okay, Yeah. so that he is the CFO for the group, but we have to use what are the officers of the university. Okay. Now we only have to share the those. So let Ashish Binda be there, Okay. ready, or if he can come to the campus and do his work from sitting here in मैम the. वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी मैम. Ma'am's voice is very feeble. Very clear. मैम का आवाज तो आ रही है नुतन मैम. You are having the earphone, no? Can you hear me now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, if the screen is closer to you. कम आ रही है, बहुत कम आ रही है. बहुत कम आ आवाज रही आ है. रही है, बहुत कम आवाज है, बहुत कम. नहीं मैडम का सुन पा रहे. अपने सिस्टम चेक करो बाबा, मैडम का वॉइस इज वेरी क्लियर. Very clear. I don't know why. सर हेडफोन लगाया है ना आपने. हेडफोन वालों को क्लियर है, बिना हेडफोन वालों को तो क्लियर होगा ना. बिना हेडफोन वालों को भी क्लियर है. आई एम ऑन लैपटॉप and it is not very good laptop, but I can hear very well. This I cannot resolve. So okay, I can make my voice little louder. Okay, so ma'am, you are very clear. Yeah. So that once again I'm quickly repeating that this is a very important visit to our campus, because since the new act, the UP Private University Act came in 2019, as per that act, that the UP State Higher Education Council was established, and that council can visit the universities anytime and inspect with respect to the resources, with respect to the faculty, with respect to the students, the facilities, teaching, learning, and the examinations and the progression of the students. This visit to our university got triggered because there was some university without having the regulatory bodies approval. They were running some programs. So this body immediately sent the inspection team to some of the universities in Lucknow region, and our campus was there, but we have the approval of all the regulatory bodies, so we did not have any difficulty. And since they have visited our campus in Lucknow, now the team is coming to Noida also, and they are visiting they have given the long list where even the Amity's registrar also has to go and visit, and those university and submit the reports. So normally it is a 4-member committee wherever they are going. So all those institutions which have the
programs approved by the regulatory bodies. You should remember what intake exactly has been approved and what are the norms of those regulatory bodies, and are you conducting those programs as per the norms of those regulatory bodies. Those norms are sometime, not always, sometime are different from the UGC norms which we follow in journal. And so therefore you should have that, that for example, for us, passing in the continuous assessment is not compulsory, but in other program like Council of Architecture, NCT, where passing in the continuous assessment is important, and without passing in the internal, you cannot appear in the external examiner. So those things you people have to, if they ask and if there's a concerned HOI is there, should explain in case they ask the question. We should not volunteer anything. We should volunteer only things, while we are talking about the student support, their well-being, industry engagement, placement, alumni engagement, alumni mentoring, research, student research, those kind of things, student achievement, club committee, inter-institution competition, those kind of things we can, but which are normal, but we should not be volunteer something which is not needed. Hello. Dr. Tandon, are you there? Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am, I'm there. Yeah. So would you like to say something? Yes, ma'am. Already it has been explained, and we are looking forward to the visit. And when they visit various labs, just a humble request to all the HOIs, if they can have, will be giving them the list of the number of publications. If few publications which are good one, if you get a reprint ready with you, so sometime they would like to see few reprints. So that would be a good idea. That's it, ma'am. Have the list. Dr. Sujata, are you there? Dr. Murthy? Dr. B.K. Murthy? Hello. Good afternoon, sir. So, Dr. Tandon, Yes, just ma'am. the startups. We should have the data of all the students startups. Yes. I talked to Dr. B.K. Murthy. He should compile with the help of Garima and Dr. Sujata Pandey and others. Sure. And that. And placement data also. We will see that we have. Dr. Bansal, will you be getting the place? Otherwise, we have the images. I will ask the rotation he will have. So the placement and higher education and startup. So Dr. Tandon, startup, you talk to Dr. Murthy because he is not here. Okay, I will talk. I will talk. Yeah, thank you. Okay. So the numbers of what else? Hanji. That's all. Any suggestion? Any queries? Sir, नहीं यहाँ पे रहोगे सर. मैम ये फाइनल प्रोग्राम कब तक आ जाएगा मैम? फाइनल प्रोग्राम कब तक आ जाएगा मैम? देखिए, अभी हम किसी के साथ कोई भी शेड्यूल शेयर नहीं कर रहे हैं. जी. हम सिर्फ टीम शेयर करेंगे कि कौन कौन सी टीम हम बना रहे हैं. वो MK शर्मा जी आप लोगों को कम्युनिकेट कर देंगे, हम उन्हीं को देंगे. He will communicate which all the teams are there. ओके. और टेंटेटिव प्रोग्राम शेड्यूल भी देखते हैं अगर हम भेज दें, बट दैट विल सेंड द टेंटेटिव प्रोग्राम शेड्यूल. ओके, बट विच इज नॉट okayed by them, that is in a way proposed by us. Okay, we will share that. And but that can be the totally different once they come. एंड मैम सभी इंस्टीट्यूशन को अपना सारा कुछ फाइल्स वगैरह सब रेडी रखता, प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग इन द मीटिंग रूम और समवेयर. नहीं, वो तो डॉक्टर खत्री के पास होना चाहिए. अगर उनके पास नहीं है किसी का प्रोग्राम स्ट्रक्चर, आपकी बोर्ड, देखो एक बात, आपकी बोर्ड ऑफ स्टडीज के मिनट्स सारे, आपकी बोर्ड ऑफ फैकल्टीज के मिनट्स अगर डॉक्टर खत्री के ऑफिस में नहीं आए हैं, वो आप आज प्लीज सबमिट कर दीजिएगा. मैम सबमिट हो चुके हैं. हो चुके हैं. ताकि और आप देख लीजिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट रूम में आपके रिस्पेक्टिव फैकल्टी ऑफ स्टडीज के डॉक्यूमेंट्स लगे हैं.
दूसरा आपका जो है डॉक्टर खत्री, अगर आपके पास है, नहीं तो रिसर्च कॉन्क्लेव हमने लास्ट ईयर करवाया था, इस साल तो हम करवा नहीं पाए थे, कमिंग ईयर फिर करवाएंगे रिसर्च कॉन्क्लेव। उनकी बुकलेट जिस जिस डोमेन की आपके पास है ले लीजिए, नहीं तो लाइब्रेरी से मंगवा लीजिए, ठीक है? हाँ, वो कर लीजिए। और स्टूडेंट के रिसर्च प्रोजेक्ट्स अच्छे वाले, हाँ, और द जी। स्टूडेंट के इंटर्नशिप के अच्छे जो है आपके, जो बेस्ट अभी आपके हुए होंगे ना, थीसिस है, एनटीसीसी थीसिस है। एंड वही ना, डिजर्टेशन का बेस्ट हर डोमेन वाले डॉक्टर थोड़े थोड़े ले लेते हैं। हाँ? मैम सुजाता पांडे हेयर, मुझे कुछ करना है। अरे मैंने कहा सुजाता, आप तो बोल ही नहीं रही थी, मैंने कहा गायब हो तुम। मेरा म्यूट, मैं मोबाइल में ज्वाइन किया, ढूंढ रही थी कहाँ है करके। ओके, इसका अभी मैंने अनम्यूट किया अपने आप को। सुजाता, हाँ जी मैम। you must have the Yes ma'am. details of the design project, but more importantly the student startups, and you should have your drone. अच्छा, ठीक है मैम। AIDC, you know, we will arrange the visit of AIDC, ठीक है मैम। and anything related to IIC, ओके मैम। student startup, ठीक you है। know, the यस hackathon मैम। which we have hosted and coordinated, all ओके those मैम। huh? ओके मैम। Yeah. So those हाँ, things हाँ। will be there. I have requested Dr. Nan to, you know, to talk to Dr. Murthy and to you. Just see that whatever comes under IIC and the student progression for the startups, all ठीक है those मैम। there we will be making one team of the students progression startups. So ओके all मैम। you will be, you know, along with Dr. Murthy, all of you will be invited if they agree कि we want to meet this group. तो ठीक है आप मैम। कितने, how many meetings you do, how many activities do, those you have the mentee institutions also, all those things. ठीक है मैम, that we will do. हाँ। Okay. It's good, Sujata, you are here. I was about to give a call to Murthy ji, but thanks, you have joined. Now you know everything. If you have still any query, please feel free to ask me anytime. Okay sir. Okay sir. Yeah. Dr. Sajnani? Dr. Sajnani? जी मैम। You will identify your best student of hospitality. फॉर सर्विस मैम प्रांशु भी है मैम। प्रांशु इज इन मीटिंग। प्रांशु, डॉक्टर प्रांशु। Pranshu? Yes, ma'am. आप अपने you select your best team for Okay, ma'am. morning का जो है, जी मैम। E2 लाउंज में नहीं मैम। नहीं यहीं पे अच्छा। लैब भी विजिट करेंगे। जब लैब के भी है, आपकी बेकरी विजिट करेंगे या लैब जी मैम। करेंगे, तो बेकरी में कोई ना कोई प्रोडक्ट होना चाहिए फ्रेश। जरूर मैम। आप अपनी Sure, ma'am. फैक्ट्री से कह दीजिए उनको वहां कर वो हो तो, और प्लस यहाँ के लिए स्टूडेंट हॉस्पिटैलिटी के लिए जी मैम। प्रांशु जी। मॉर्निंग से जब से आएंगे तो मतलब वो दे शुड बी हियर बाय 10 o'clock, थोड़ा 10 से पहले ही आ जाए, ठीक है? E2 लाउंज में। उसके बाद जो लंच का पता ही चल जाएगा, जब होगा तो लंच के लिए भी चाहिए होंगे, इवनिंग की हाई टी अगर होगी तो हाई टी के लिए भी चाहिए होंगे। जी मैम। ओके, गार्लैंड वगैरह मंगवा लीजिएगा सब। एनी क्वेश्चन बाय एनीबॉडी? डायरेक्टर एडमिशंस? Good afternoon, ma'am. Anjani, yes, director admission. No, all points are covered, ma'am, and we are also having our own brainstorm to identify what can be the questions and what will be the Because you responses. have all the questions. You have already compiled the data, Yes. complete data for the admissions. Yes. Whether you are taking admission through CUET or Yes, all those. whichever, all that is there. And I need not to mention to the HOIs, they know in their respective programs how we are doing the admissions. Okay, so they may ask about the admissions also, and the student diversity. They may ask the those socially disadvantaged Yes. students also. So you should have that. We always Yes. do on the merit basis, and we support the student wherever the need is there. वो अर्चना वो निकाल लेना, वो जो एक सेल है ना
हमारी बनी हुई, जिसकी जयंती पुजारी चेयरपर्सन है। Okay. Yeah. Asha said she will read this slow. नहीं, not क्या लेसन कहाँ गया? ये स्टूडेंट का नाम क्या है? So if there's no question, क्या then we can. आपका वहाँ पे ना अंजनी, मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अंजनी, आप और रेनू जी आप जो है अपना प्लेसमेंट का कंप्लीट डेटा रखिए। माय रिक्वेस्ट टू ऑल द HOIs, प्लीज हैव योर प्लेसमेंट प्रोग्रेशन डेटा इन ऑल कैटेगरीज। लेकिन प्लेसमेंट का और किस कंपनीज के साथ हमारा कोलेब्रेशन है, all that you should have for the whole university. So we will put the visit to ATPC also. श्योर मैम, थैंक यू सो मच मैम। एंड मैम सिंस मैम आपके सेंटर का भी हम विजिट करवाएंगे, मतलब we are putting in the schedule. Yes, ma'am. Visit to your department also. Okay, ma'am. Please have your team there, but tell your team कि the moment it happens, they all should be there. Yes, ma'am. तो आप अपना हॉस्टल वाला जो विजिट करवाते हो, वो भी रिपोर्ट्स आपके पास सब कुछ होंगी। Yes, all reports. प्रेजेंट दैट एंड वो जब भी लेटेस्ट इंसिडेंट जो हुआ था, आपने मेरे से शेयर किया था 3-4 दिन पहले, तो यू नो कि ऐसे इंसिडेंट भी होते, तो हाउ वी आर हेल्पिंग देम। So can we talk about those incidents? Yeah, because while you're telling, not Anonymous. Anonymous. understand कि sometime the COVID time also happened something in between, because आज की तारीख में एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। Okay, and how we as a university, the founder का विजन, उसमें चांसलर का विजन करते हुए, yes, you know, this Nitin, Dr. Nitin, are you there? संजीव, नितिन को वो कह देना हैप्पीनेस सेंटर का, then he can present. Which let me combine all my interests, which is lifestyle, fashion, and fitness. Chaya Thanks so ma'am. much for giving me this beautiful opportunity. Chaya ma'am. Thanks so much. Yeah, Nitin, you should be ready because we will be arranging the visit to your center also. Okay, ma'am. Okay. Yes, ma'am. तो आपके कितने स्टूडेंट्स हैं, आप हैप्पीनेस के लिए क्या क्या एक्टिविटीज करते हो? Okay, ma'am. Sessions, how many students are involved, all kind of things, even So though only for this semester or previous also? We bring it. in general Generally. ठीक है, ma'am. ठीक है, okay. छाया मैम, छाया मैम। मैडम, this is Prakash here for the ACTR. Although I have already discussed with Dr. Khatri, but is there any specific program slot for the ACTR? No, what we are doing, we are in the research labs, because you are in this J block, J1, you are in J block, so most likely we will be visiting your lab. Okay, and so Dr. Tandon will be making the route plan, which all the research lab must be shown. So I will request Dr. Tandon if he can make the route plan for the list for the research facility. Dr. Tandon, Sure, ma'am. Sure. आप पूरी लिस्ट बना लीजिए रिसर्च फैसिलिटी की, जो हम वो करें। अभी जैसे ACTR का तो वैसे बहुत बड़ा अचीवमेंट है। Correct, correct. Yep. छाया मैम, where are you? मैम, जो रूट प्लान है वो मेल से शेयर करेंगे ना, बिकॉज नॉट एवरीबॉडी इज ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। वो हम फैसिलिटी का भी देखेंगे। अभी रूट प्लान हम बना ही नहीं सकते हैं कि what will make the list. My submission was to share the information by mail, not because not everybody is on WhatsApp group. No, we will share to the email also, and वो हो सकता है लेट इवनिंग आप लोगों के पास पहुंचे जी, या अर्ली मॉर्निंग पहुंचे। जी जी, हाँ जी मैम। छाया मैम, ऐसा है कि छाया H ब्लॉक हम पक्का विजिट करवाएंगे। आवाज ही नहीं आ रहा। मैंने कहा the H block will definitely be visited. Okay, ma'am. Hostels. Okay, ma'am. तो आप अपने जो टीम जो है आपकी, प्लस जो आपके स्टूडेंट्स हैं जो होंगे, अच्छे जब
पिक कर लेना इंटरेक्शन करवाने के जी लिए। जी जी। और आप क्या क्या स्टूडेंट्स के लिए करते हैं लेटेस्ट Somebody is disturbing. शेफाली या मैडम ठीक है, लाइब्रेरी मैम। के लिए कोई गाइडेंस? ओके हेलो मैडम लाइब्रेरी के लिए कोई गाइडेंस? लाइब्रेरी विजिट होगा वो तो बहुत अच्छी तरह से आपके सब डोमेन वाइज लिस्ट चाहिए बुक्स की, नंबर ऑफ बुक्स का, जर्नल्स कितने हैं, तैयार है लिस्ट हमारे पास। बुक्स कितनी है डोमेन वाइज, रेफरेंस बुक्स कितनी है डोमेन वाइज, जी और जी आपका कितना फुटफॉल है, जी और आपके डिजिटल रिसोर्सेज कितने हैं, जी वो सारी चीजें होनी चाहिए। यहाँ तक कि आपका कहीं पे डॉक्टर नन और डॉक्टर बंसल, डॉक्टर टंडन, डॉक्टर बंसल, आप जी मैडम जी। जो लैब्स हैं ना, टीचिंग लैब डॉक्टर खत्री, हमारे क्या क्या सॉफ्टवेयर्स हैं उसकी भी लिस्ट बनवा लीजिए डॉक्टर सोडी से लेके। ओके वैसे लाइब्रेरी का डेटा बैसल सर को दे दिया था सर मैडम हमने। दे दिया, लेकिन आपके विजिट हाँ जी 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 हमारे पास, हाँ हमारे पास है बिल्कुल। वो देंगे आपकी जगह जब जी आप ही जी को जी देना, आप जी जी तैयारी जी रखिए बढ़िया से। जी 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 ठीक है जी जी जी। फुटफॉल और ये सब क्या ये है मेरे पास डेटा है मैडम मेरा। ठीक है ओके थैंक यू। एनी डॉक्टर दत्ता इज देयर? नहीं डॉक्टर सोनी, छाया मैडम। यस मैम आई एम हियर। डॉक्टर सोनी जरा आप ना विजिट कर लीजिएगा टीम के साथ, एसेट की और एआईटी की, और ये जो ई ब्लॉक में सारे लैब्स हैं। सुनीता मैम कल होंगी नहीं। ओके मैम। तो आपको वीके I will जैन be की visiting. लैब्स भी जाके एक बार देखाओ, टीम ठीक देखो, है। क्योंकि जो ई ब्लॉक में जो विजिट होगा उसके इंचार्ज आप होंगे। ओके मैम। आपके साथ डॉक्टर पांडे हैं, उधर से सुनीता रतन के यहाँ से कोई वो होगा तो। हाँ मैम कुछ कहने थे। Dr. Sangeeta Tiwari would be there. I have already told her. तो From previous. डॉक्टर सोनी, यस मैम। तो डॉक्टर संगीता तिवारी के साथ कोऑर्डिनेट करके वीके जैन की लैब, सारी लैब जो है आप दिखाना चाहते हैं, एक राउंड मार लो, ठीक है मैम। ताकि आपको पता है कि आप क्या दिखाओगे। हाँ, और कैसे अगर यहाँ E2 से निकलेंगे तो रूट मैप क्या होगा आपके E1 E2 E3 का। ओके मैम। वो अपना बना के रखो। उसी तरह से जे ब्लॉक का किसको दोगे? ओपी से ना डॉक्टर, हाँ नहीं नहीं वो रूट यस मैम। डॉक्टर ओपी से ना यस मैम। J1 J2 J3 का ओके। रूट मैप, सारे जो विजिट करने इम्पोर्टेंट वो आप बना लीजिए। ठीक है मैम। ओके तो तो आप बना के, और आप हर इंस्टीट्यूशन में कि कहाँ पहले जाओगे कैसे जाओगे, तो ऐसा होना चाहिए कि रिपीट ना करना पड़े। अगर आप J3 से शुरू करते हो फिर J2 से J1, उस तरह से जो हो। और इम्पोर्टेंट जो लैब्स हैं जैसे मोनालिसा की लैब है, हृदय प्रकाश की लैब है, वो सारी आप एमसर में कई लैब्स एमसर का लैब है, एमसर का लैब है मैम। मैम J3 से शुरू करेंगे, एमसर, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। जहाँ से भी वो आप पूरा प्लान बना लीजिए, आज ही भेजिए। मेरे को भेजिए, डॉक्टर टंडन का, हमको चारों को। हाँ हमें भेज देना सेना जी, डॉक्टर डिस्कस कर टंडन, लेंगे फिर डॉक्टर मैडम जी, से। ठीक है। तो you're saying something again? You're saying something again? हाँ यस छाया, Yes, ma'am. आपको ट्रेडिशनल वेलकम Okay, ma'am. एंड रंगोली। ओके मैडम वीके जैन है। and nicely dressed up your students. डाइवर्स, देखो मुझे पता है वो दिवाली पे बहुत चले गएंगे, लेकिन उनके दिवाली का मौका है, अच्छी तरह से डाइवर्सिटी पूरी दिखनी चाहिए, ट्रेडिशनल ड्रेसेस में होना चाहिए। आई नो यू विल डू वेरी वेल सो। ठीक है मैडम वीके जैन है। बिल्कुल जरूरत है, कल वर्किंग डे है मैडम, आपकी बिल्कुल जरूरत है। रिसर्च की जो टीम होगी डॉक्टर टंडन की लीडरशिप में, आप लोग सब वहाँ होंगे, स्मिता साहू, आप, ये सब। डॉक्टर टंडन जी मैम।
अभी ये मीनाक्षी में से पूछ रही थी, मेरी तो जरूरत होगी नहीं, मैंने डेटा दे दिया। आप क्योंकि रिसर्च मीनाक्षी 200% you are required, तो आप 200%. अपने टीम की लिस्ट बना लीजिए, हु ऑल आर गोइंग टू बी विद यू। Okay, इसका हम साथ डिस्कस करें। मीनाक्षी पक्का होगी, 100%. ट्रांसलेशन रिसर्च आपके साथ होंगे वो, ठीक है। हाँ और जी, स्मिता साहू होगी, बाकी जो है आप डीन्स को लोगे या ठीक है, रिसर्च कोऑर्डिनेटर जो भी लोगे, ठीक है, ठीक है, वो लेके अपना जो इंटरेक्शन की अगर जरूरत पड़ी करेक्ट। तो आपके पास फिर टीम होनी चाहिए, फिर मैं आप टीम बना लूंगा, अभी अभी बना लेता हूँ मैं। ठीक है। टंडन जी, ये एग्रीवोल्टिक दिखाना चाहोगे वीके जैन है? बिल्कुल बिल्कुल हाँ दिखाएंगे जी, बिल्कुल। वीके जैन साहब जरूर दिखाएंगे। वो जैन साहब, वो आप उनके साथ केम सोनी के साथ केम सोनी के कोऑर्डिनेट साथ। करिए, क्योंकि वो आपका इंस्टीट्यूट का जो विजिट है केम सोनी करेंगे। ओके, नहीं मैं बोल रहा था टीम मैडम, ये इम्पोर्टेंट जो प्राइम मिनिस्टर से आया था एग्रीवोल्टिक विच इज वेरी पॉपुलर नाउ। तो जब हम आई ब्लॉक जाएंगे तब आपके उसका विजिट करवाएंगे। अच्छा अच्छा, ओके, I3 में जब हम पहुंचेंगे, I3 से पहले I3 के बाद विजिट करवाएंगे। तो आई ब्लॉक की जिम्मेदारी कौन लेगा? डॉक्टर सजनानी, नहीं रुको, डॉक्टर सजनानी, डॉक्टर सजनानी जी मैम। आप आई ब्लॉक का विजिट प्लान बना लीजिए, ओके, और मेरे जी से मैम। आज शेयर करें। लेकिन I3 में या तो पहले वो जो देखा जाएगा एग्री फार्म और ये जो एग्री वोल्टेक का है, और वहीं पे तनु जिंदल का भी एक वो है एनर्जी का। I3 से पहले वो फार्म जो है, तो डॉक्टर ने मैम I1 में हमारे पास तो I1 नहीं I3 का डॉक्टर टंडन जी मैडम। वो तनु जिंदल की जो फैसिलिटी है वहां पे, हाँ वो जो है उधर, हाँ जी, पहले वो, और वीके जैन का वो है, और उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये हाँ जरा आप अलग से भी मीटिंग कर लीजिएगा सबसे। मैं कर लेता हूँ, हाँ जी। ऑर्गेनिक कर फार्मिंग अभी लीजिएगा। थोड़ा हमारा इतना वो नहीं है, इतना ऑर्गेनिक, तो हम वीके जैन वाला दिखा देंगे जरूर। नहीं तो लेकिन वो ठीक करवाइए, जो भी है दिखाएंगे, चाहे वीके जैन का, लेकिन हाँ नीचे तो जी, खेती हो रही है ना आपकी। हाँ नहीं मैं अभी उनको भी, उनका डायरेक्टर को डोली जो साना को जो बुला लेता तनु हूँ। जिंदल की फैसिलिटी जो विजिट करवाने, उसको कहिए जो करना है वो करे। सफाई सफाई एडमिन को कह के वहाँ की साफ सफाई करवा दीजिए। ठीक है जी। सर हमने सफाई करवा के सोइंग शुरू कर दिया है। वेरी गुड डोली। वेरी गुड डॉली। I'll inform the farm manager. तो डॉक्टर सजनानी, आप पूरा विजिट प्लान बना के, क्योंकि हमको सिर्फ बहुत कुछ दिखाना नहीं है, हमको मूड कोर्ट दिखाना है वहां पे। जी मैम। प्लस हमको जो हमारी जो वो है फूड प्रोसेसिंग यूनिट है वो दिखानी है, और प्लस हमको जो है हॉस्पिटैलिटी की लैब्स हैं वो दिखानी है, ऊपर IT की लैब्स दिखानी है, एंड IID तो आप जब वहां से आओगे तो पहले IID का दिखाओगे। जी मैम। डॉक्टर सिंह ग्रुप VC, Yeah, tell me please. group VC, that we would like to have the visit the IID. So if you can plan, so what we will do that organic agriculture from their side when they are entering, so we can bring them from the I2 and then take to I3. डॉक्टर सजनानी, आप डॉक्टर सिंह के साथ बात कर लीजिएगा कि जी IID मैम। का कैसे विजिट करेंगे, बट दे मस्ट विजिट IID। जी मैम। ओके, अगर वो विजिट करते हैं तो IID का हम प्लान करेंगे। तो दैट इज ऑन द ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट IID है, और उसके बाद मूड कोर्ट दिखाओगे, उसके बाद लोअर ग्राउंड फ्लोर की फैसिलिटीज। मैम अभी मूड कोर्ट तो जैसे हमारा ऑडी है, तो उसको एक मूड कोर्ट की शेप देनी पड़ेगी ना मैम? उसको कल जो है उसका सेटअप करवा लो मूड कोर्ट फॉर्म में। मैम शेफाली मैडम है ना मैम, उनको शेफाली डॉक्टर शेफाली डॉक्टर शेफाली ये I2 मूड कोर्ट को आप कन्वर्ट कर दो जी। नहीं, वो जो अभी सेमिनार हॉल जो भी बना उसको IT मूड कोर्ट में कन्वर्ट कर दो। नहीं, जो एक मैम हमारा प्रैक्टिस मूड कोर्ट है, नहीं वो भी है, I2 को भी वो हमारा मूड कोर्ट ही हम उस दिन दिखाएंगे कल। हाँ मतलब हमारे पास एक मूड कोर्ट तो बड़ा हॉल है और एक जो हमारा प्रैक्टिस मूड कोर्ट है।
हाँ, वो दो हैं दो हमारे पास। फैसिलिटी है, लेकिन I2 को मूड कोर्ट के तरह से दिखाओ कल। मैम जो हाँ मेन फूड कोर्ट के ही उससे होता है, वो बना ही हुआ है उसी। मैम हम लोग करते भी वही है, वही कर दूंगी मैं देख यार करके। मैडम जी, यार उसका सेटअप तैयार करो, वो चेयर वगैरह लगा के। यस मैम मैं समझ गई, मैं वही कह रही हूँ, वो जो जजेस की चेयर्स लगती है वो करवा के हम करा देंगे। अभी हमने जो BCI पोर्टल के लिए सब वैसे ही सेटअप करा रखा है। ओके जी मैम कर लेंगे। मैम अविनाश बोला है F2 वाला ऑनलाइन दिखा रही है, यहीं पे है। अविनाश इनका बना हुआ सब सेट। अविनाश जी उसके के ब्लॉक का डॉक्टर DP सिंह ये नोट कर रहा कोई, मैं किसको क्या मैडम गुड आफ्टरनून। अविनाश जी हमको एमिटी ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग दिखाना है, तो जी F मैम, ब्लॉक में जब हम विजिट कराएंगे तो आप वहीं दिखाओगे? वहीं पे ठीक रहेगा F2 में। ठीक है तो वो कॉल सेंटर्स वगैरह अगर जब जाना चाहेंगे तो दिखा देंगे, वहां पे भी नहीं, मैं वो बोल अपना बता देना कि वहाँ पे कॉल सेंटर है, ये सब कुछ है। सब कुछ। ठीक है। हाँ तो आप मुझे वही डॉक्टर आपसे जब नहीं थी तो डॉक्टर खत्री से बात कर रहा था कि डू वी आल्सो प्रिपेयर सम काइंड ऑफ कंटेंट और द प्रेजेंटेशन कि उनको बता दे कि देखो आप बना के वो रखो, उनके हाथ में थमा देना, अगर वो हाँ अगर प्रेजेंटेशन रेडी रखना, देखना चाहें। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके मैम am I audible मैम? यस DP जी मैम। के ब्लॉक की जिम्मेदारी आपकी है। जी मैम। आप सारे HOE के उनसे बात कर लो, एंट्री K2 से होगी ओके, या आप K1 से करना चाहो, विथ K2 से जरा ग्रैंड एंट्री लगेगी। ओके मैम K2 सुना तो सही जी क्योंकि वहां पे एस्को ASFD है, हाँ जी हाँ जी उनकी CRC वगैरह वो दिखाते हुए हैं। ठीक है मैम। तो ऐसे भी कर सकते हो कि K1 से करते हुए K2 के टॉप फ्लोर से आप K3 बस दिखाते हुए कि यहाँ पे जो है ये डिसिप्लिन के प्रोग्राम है, फिर इधर से उतरते हुए नीचे आते जाओ, K2 दिखाते हुए K2 से बाहर निकलो, क्योंकि वो जी मैम। बहुत इम्प्रेसिव है उनका K2 का ग्राउंड फ्लोर। मैम अभी वो स्टूडेंट लाउंज अभी मैम वो उसमें पूरी चालू नहीं है मैम, अभी तो बंद ही पड़ी है वो। खाली है वो मैम अभी खाली है मैम, वो उसका बिल्कुल सेटअप नहीं हुआ खाली मैम है अभी। अभी। मैम अभी हमारे उनके स्टूडियोज जो के साइनेज स्टूडियोज है ना मैम फर्स्ट फ्लोर पे वो बड़े इम्प्रेसिव हैं। उसका साइनेज नहीं है अभी यार। फर्स्ट फ्लोर पे जो उनके स्टूडियोज हैं वो वो इम्प्रेसिव है। दिखाएंगे, वी विल शो। वो है कि यहाँ पे वो दिखाना ना जब पूरा कि यहाँ पे एग्जीबिशंस लगती हैं, जी 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 उसको वैसे दिखाना कि आर्किटेक्चर ठीक की एग्जीबिशन, फैशन टेक्नोलॉजी की एग्जीबिशन, ठीक फाइन आर्ट्स की एग्जीबिशन, फिल्म एंड ड्रामा की एग्जीबिशन, यहाँ पे ये लगती है। और प्लस अंदर वो स्टूडेंट वाला बहुत ब्यूटीफुल है, तो चारों तरफ एग्जीबिशन लगती है। ओके जी मैम। उस तरह से करके आप दिखाओ, वैसे कर K1 सकते से हैं। शुरू होके K2 तक, और K2 से K3 का जो एंट्रेंस है ना, वहां से दिखा के कि ये जो है हमारे आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस के डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, एक से निकल के उसी से दूसरे फ्लोर से निकल के फिर K2 में आ जाना, फिर K2 से नीचे तक करते रहना। तो यू डोंट टेक Will they visit? हैं? Will they visit, for example, AISS in K3? दे में विजिट, हम प्लान तो पूरा बना के रखेंगे ना। ठीक है। हाँ? आप ये मनाओ कि वो आपको विजिट करें। ठीक है। हाँ? तो हमको तो तैयार रहना ना, एकदम सर धज के। हम लोग तैयार हैं ना। हाँ? जी। Yes. तो so far we learned मैम, तो इसका मतलब वो फर्स्ट दे विजिट एग्री फॉर्म्स, देन I block, then J block, then K block, then they will come in E block। ना 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 ना, वो हम ई से ही शुरू करेंगे। अच्छा मैम, अभी आपने सीधा जैसे वहां से फार्म हाउस से बात की ना आपने एग्री फार्म से। ना सुनो, वो VK जैन जी ने बीच में कॉल कर लिया था, आपने सुना नहीं होगा, तो मैंने उनको ये कहा था डॉक्टर KM सोनी के साथ कोऑर्डिनेट करिएगा, आपका विजिट जो वहां का होगा एग्री वोल्टेक का, जब वो I ब्लॉक विजिट करेंगे। ओके मैम, तो मतलब शुरुआत ई ब्लॉक से ही होगी पहले। यस फर्स्ट विजिट ई ब्लॉक। ओके मैम। ओके ठीक है, प्रोग्राम में चेंज हो सकता है तो वो फ्लेक्सिबल हाँ रहनी है हमारे में। ओके मैम। ठीक है, ठीक है। व्हाट एल्स? तो रॉ डोमेन में हाँ वैसी मैम हाँ जी बंदोबस्त जी।
लॉकडाउन में हम लोगों ने एक प्रेजेंटेशन बना के रखे हैं, इन केस दे वांट टू see in totality. Bandyopadhyay ji, they are not having the interaction with the institution in depth. ऑनलाइन एक अलग है, इसलिए हमने उनको कह रखा वो सिर्फ आपकी फैसिलिटीज करेंगे और उनके साथ आप जो लोग राउंड पे रहोगे, क्योंकि आप तो वो है ना कि आप रहोगे नहीं, कल आपकी टीम रहेगी, तो वो जो उनको विजिट करवाएंगे उस समय जो क्वेश्चन करते रहे उनके जवाब आपकी टीम अच्छी तरह से देती वो है। मैंने ऑलरेडी भानु और शेफाली से मीटिंग किया है। आपने बताया मूड कोर्ट को तैयार रखने के लिए मूड कोर्ट तैयार कर देंगे, दिखाने के लिए इनके दे वांट टू सी, प्लस 8-10 डिसर्टेशन का कॉपी, 8-10 इंटर्नशिप का कॉपी, आपका हम लोग रख देगा, जो भी किताब छपे है किताब का भी कॉपी रख दिया। आपका सीआरसी विजिट जरूर करवाएंगे। उसी तरह से जो है हम एबीएस में सीआरसी विजिट करवाएंगे, तो वो पूरे मैनेजमेंट डोमेन की बात करेंगे वहां पे, प्लेसमेंट की, और ठीक है। सीआरसी में तो हमारा 94% एस्पिरेशन अचीव हुई है। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्या रह गया? एडमिनिस्ट्रेशन को विजिट थोड़ी करेंगे, अरे वो अलग तो जेपी सिंह जी से अलग बात होगी बहुत सारी। वो मेरे सामने हुई थी जेपी सिंह, डीएसडब्ल्यू यस मैम। डीएसडब्ल्यू यस मैम। आपको याद है कि आपको जब एफ ब्लॉक में आप कह रहे थे कि आपके ये ऑफिस बनना है, वो ऑफिस बनना है, वो ऑफिस, वो लिस्ट है ना आपकी सारी जी, वो अपनी पूरी लिस्ट वो करिए, ओके? ठीक है। और वो सारी नेम प्लेट बनाइए। अभी मेरे को लिस्ट भेजिए, नेम प्लेट बनाइए, और वो कहाँ लगेंगी वो है, और आपका कौन बंदा किसके लिए इंचार्ज है वो भी करो। जैसे एसके श्रीवास्तव जी एंटी नार्कोटिक के हेड हैं, ठीक है? वो जो वुमेन हेल्प डेस्क जो है, ऐसे कई चीजें ना, वो पूरी लिस्ट में यूजीसी के नॉर्म्स के हिसाब से जो कुछ है, ठीक है मैं निकालता हूँ। ठीक है? वो डाइवर्सिटी के लिए भी वो है ना कि एक कमेटी जो है, आप पूरी करके वो दिखाइए। फिर संजीव बंसल जी ओवरऑल इंचार्ज है ना हर चीज के, ठीक है तो ताकि वो भी जरा रिवाइव कर लें उसको, ठीक, तो उनको पता रहे कि ये सब है। और ये मेरा श्रीवास्तव जी ये देखते हैं, तो एचपी ये देखते हैं, तो नागा लक्ष्मी न सॉरी वो लक्ष्मी आहूजा ये देखती है, हेल्प डेस्क को अल्पना कक्कड़ ये देखती है, तो वो सारा जो है, और सुजाता खंडाई ये देखती है, वो सारी चीजें, ठीक ठीक है। क्योंकि हम स्टूडेंट वेलफेयर की जब बात करेंगे, तो वो जो आईआईसी है ना, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, वो भी वहीं आ जाती है, मेंटिंग भी वहीं पे आ जाती है, एसीजीसी भी वहीं पे आ जाती है, एंटी नार्कोटिक भी वहीं आ जाती है, एंटी रैगिंग भी, सब कुछ सब वही पे आ जाएगा, सब एक जगह। वो पूरी लिस्ट बनाई है, देन एक वो करेंगे, तो डॉक्टर संजीव बंसल विद हिज टीम फॉर दीज मैटर्स कैन मीट टू इन वन गो इफ दे से। ठीक है, ठीक, ओके। डॉक्टर बंसल एनीथिंग? Dr. Tandon? Thanks ma'am, thank you. Okay. Any other input or queries from any dean, HOI, DGs? Ma'am, will there be any possibility that they may look forward to understand deeper insights about the alumni functioning and the how we are partnering with them? Any support services, benefits we are availing? रितु का alumni का तो वो होगा, will be there. Where is Ritu? Yes, ma'am. Ritu, tell me why this question has come from Anjani and not from you. अभी बाद में बात करूंगा तुमसे मैं। चलो ठीक है रितु, you have to be fully prepared. Alumni relations का, ठीक है? Ma'am, I am just worried, like I don't have the list of alumni engaged in ARB and BOS and admission board. Listen. But otherwise, I have the record of others. You only have to composition में कितने alumni होने हैं. Yes, ma'am, that I. Only that much you need. You have to say in all the area advisory board,
We have so many area advisory board. Tanu Arora se le lo total how many area advisory board? In all area advisory board, we Okay. have the alumni. जी मैम, Alumni किस एक्टिविटी में engage होते हैं? You should know that. that ma'am I can explain. हाँ. मैडम Yes, मूर्ति we have है। the alumni coordinator for. हाँ डॉक्टर मूर्ति। हाँ, मुझे भी रहना है वहाँ हाँ, मीटिंग में रहना है। अरे बिल्कुल आपको रहना है। ओके, आपको मैं ढूंढ रही थी। ओके, तो मैं फिर आप नहीं मिले तो मैंने डॉक्टर टंडन से कहा कि वो आपसे बात करेंगे। yeah, Because I'll be student, two things. The translation research. yeah, So you have to be in team with Dr. Tandon because research he looks after. And then also the student startup. okay, And so many activities which we are doing for the students' progression, the startups. Okay. So if you you know we are just now told Sujata Pandey because you were not there, so then Sujata came, so he said ki please get the list of all the activities and the list of the yeah, that list was startups given are there earlier. also. Yeah, So okay, you will be there in the meeting, whether okay, it is for the students' progression or whether it is the translation research. okay, Okay, and Wait. then since you will be there, and that what we are doing for the semiconductors, quantum yeah, computing, all that also you will yeah, okay, space technologies, where the right, founder right, has committed yeah, okay. be the single largest contributor to space technology. ये मीटिंग कहाँ पर मैडम? E2 में? लंच तक होगा शायद, We'll let तो you वैसे know. हम दे रहे थे, Okay. जल्दी थोड़ी सी कह देते हैं, ठीक है। तो उसी रूट से आओ, काम हो गया। शेफाली सॉरी मैम। मैं अपने को म्यूट कर लिया करो। ओके, ठीक है। So any other question by anybody? So once again, wish you all the best for tomorrow's visit, as well as wish you a very, very happy and joyful Diwali to you, your family, your friends, everybody. Okay. Thank you, ma'am. Okay, thank you. Thank you. Thank Same to you. you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम, थैंक यू सो, Thank you, ma'am, and wishing you a very happy Diwali. हाँ थैंक यू, हैप्पी दिवाली मैम। Reciprocate the same, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। श्रीवास्तव जी। जी मैम। अरे हाँ, Special education का और जो RCI के प्रोग्राम्स का है, जी जी उसका जरा आप, क्योंकि हम चाहेंगे रेगुलेटरी बॉडीज से जो अप्रूव प्रोग्राम है जी वो जी मैं भूल के बताना। रेगुलेटरी बॉडी, हाँ जी सर। बैठ जाओ, एक मिनट बैठ। इसी में कुछ हमको कह रही हूँ, सुन लीजिए।